Nagaland Power Minister KG Kenya clarified that a procedural lapse caused a controversy over IAS induction involving backdoor appointment. Kohima excise officials seized 500 cases of Indian-made foreign liquor hidden in a truck on Wednesday morning. Our Students' Conference has extended its support to the ongoing pen-down strike led by CNSSEA Joint Coordination Committee. Dramatic kidnap attempt was foiled on Thursday afternoon near the Assam-Nagaland border in Golaghat district's Chungajan B sector. Aloki Kumar Chakraborty took charge as Inspector General of the Tripura Frontier BSF, succeeding A.K. Sharma. Hello and welcome to Nltv English Primetime. This is Chanchan Kasar and now the news in detail. The Our Students' Conference has extended its support to the ongoing pen-down strike led by CNSSEA Joint Coordination Committee protesting the induction of known state civil service officers in the state. AKM called for a merit-based transparent selection process free from nepotism to protect existing civil servants' rights. The group urged all stakeholders to unite for the benefit of the Naga people and ensure an accountable and efficient administrative system. Excise officials at Kuzama Interstate Check Gate in Kohima seized 500 cases of Indian-made foreign liquor hidden in a truck on Wednesday morning. The driver, Rakidul Islam from Assam, was arrested for violating the Nagaland Liquor Prohibition Act. The liquor was loaded into Dimapur and destined for Imphal, said Deputy Commissioner Venezo Dwaho. Investigations are ongoing. A 20-year-old man from Assam, Rashidul Islam, was caught at the Kuzama Interstate Check Gate in Nagaland on October 15 with 500 cases of contraband Indian-made foreign liquor hidden under bags of essential commodities. The truck, registered NL01AK1796, was carrying multiple brands including Sterling Reserve Whiskey, MC Whiskey, All Monk Rum and Logic Whiskey. Islam has been charged under the Nagaland Liquor Total Prohibition Act 1999 and a case registered. The consignment was allegedly loaded from Dimapur and destined for Imphal. Nagaland Power Minister KG Kenya clarified at a Kohima press conference that a procedural lapse caused the controversy over IAS induction involving backdoor appointment. The March 10, 2025 vacancy circular mistakenly allowed officers without proper NPSC qualification, which was later corrected. Kenya urged all parties to resolve grievances internally and announce a subcommittee meeting in October 20 with Service Association. The Cabinet also discussed Frontier Nagaland Territory and Reservation Review Commission matters. Thank you for making yourself available this evening. Today we had the State Cabinet meeting and many long-awaited issues were deliberated. One of the first subjects we deliberated upon was, of course, the current agitation going on in the form of pen-down strike by our Kansina, NSS, Nita and associates.
against the advertisement of the IS vacancy from the state government side, which used to be conferred to government servants, officers, with a breakup of some reservation for the state civil services sector and available incident. Today we had the state cabinet meeting and many long-awaited issues were deliberated. One of the first subjects we deliberated upon was, of course, the current agitation going on in the form of pen down strike by Kansina, RSS, Bihar and associates against the advertisement of the IS vacancy. Kansina, RSS, Bihar and associates against the advertisement of the IS vacancy from the state government side, which used to be conferred to government servants, officers, with a breakup of some reservation for the state civil services sector and the other portion for the non-state civil service sector. So here a controversy has erupted. A dramatic kidnap attempt was fought on Thursday afternoon near the Assam-Nagaland border in Golaghat district, Chungajanbi sector. A group of armed Naga miscreants tried to abduct local businessman Panchan Lama from his grocery shop in Durgapur 1. The gang, arriving in a blue Wagoner around 2 p.m., stormed the shop and attempted to drag Lama out of a gunpoint. A witness, Fakhruddin, managed to escape and alert the family. As neighbors gathered, the abductors fled, but not before threatening a nearby woman. Police, including ACP Manoj Hatimuria, have launched an investigation and are reviewing CCTV footage from the area. In a major insurgent attack, militants fired rocket launchers at an army camp in Kakopathar, Tinsukia on Thursday, triggering a fierce exchange of gunfight. Several army personnel were reported injured in the assault. The insurgent group suspected behind the attack is an Alpha Squadron. Security forces have launched an intensive operation in the area as the situation remains tense. ৰাতি 12টা বজাৰ পাছত এখন ট্ৰাকত আহিছিলে তেওঁলোক আহি পিনে তেওঁলোকে গোলাবৰ্ষণ কৰি মেলি তেওঁলোক আঁতৰি যায় তাৰ পাছতে মানে হেনা শিবিৰত মানে তেওঁলোকৰ মাজত মানে ফায়াৰিং হৈছিল আৰু আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল এটো কি কৈছিল আমি হেতু সময়ত মানে হাড় পাই পিনে আমি মোৰ মা হাৰ্টৰ পেচেণ্ট দেউতা সেই অসুখে আমি সকলোৱে গৈ পিনে তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ আছিলোঁ হয় এই দেখোন আপোনাৰ ঘৰৰ যিটো সন্মুখতে ইয়াৰ পৰাই হৈছিলে হয় 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 আসলতে কেনেদৰে সেই সময়ৰ যিটো পৰিৱেশ আসলতে তেওঁ বৰ্ণনা কৰিলে আমি এইখন আসলতে ইয়াত এখন যিখন কেম্পৰ কাষতে কাকপথাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কাষতে লাগিছে তাৰ অধ্যক্ষগৰাকী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আসলতে কেম্পৰ কাষতে এখন বিদ্যালয়ও আছে কি ক'ব মানে বিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ একচুয়ালি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছ 9 10 11 12 চাৰিটা শ্ৰেণী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে হেনা চাউনি লগত আছে যদি এনে ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত বহুত ভয় সোমাই যাব আৰু ভয় সোমাই যাবৰ বাবে সোমাই যোৱাত তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীত
যিটো অধ্যয়নৰ কাম আছে অধ্যয়নত তাৰমানে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিব বুলি মই ভাবিছোঁ আপোনাৰ মতে কি ক'ব সেই মুহূৰ্তটো কেনেকৈ ক'ব বুলি ৰাতি যিটো মুহূৰ্তত ইয়াত হৈছে মোৰ ঘৰ একচুৱেলি ডুমডুমাত আৰু যিটো মুহূৰ্তত হৈছে সেই সময়তে মোৰ এছিষ্টেণ্ট মোলৈ ফোন কৰিলে যে ছাৰ কলেজৰ সন্মুখত আৰ্মি কেম্পত এনেধৰণৰ দিৱালী নিচিনা বোলে বম ফুটিবলৈ ধৰিছে মই কি কৰোঁ এতিয়া তেখেতৰ ঘৰ যিহেতুকে ওচৰত আছে মই ক'লোঁ আপুনি ঘৰত সোমাই থাকিব ওলাব নালাগে ঘৰৰ পৰা আমিনো ৰাতি সেইবিলাক যদি আতংকময় কিবা এটা পৰিৱেশ হৈ যায় প্ৰথমতেতো নিজকে ছেভ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছতহে বাকীখিনি দেখা হ'ব সেইকাৰণে আপুনি সাৱধানে থাকক ৰাতিপুৱা হ'ব আৰু তেতিয়া আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো ল'ম কি হৈছে কি হোৱা নাই হয় আচলতে নিশ্চয় A 13-year-old boy tragically died after being hit by a speeding SUV in Delhi's Vasant Kanj area on Thursday. The vehicle reportedly struck the child at high speed, causing fatal injuries. Police have registered a case and launched an investigation to identify the driver and determine the exact circumstance of the accident. रास्ते में पहुंचो अस्पताल लेकर के फटाफट बोला अस्पताल लेकर पहुंच गया हम लोग बोले आ रहा हूं मैं जब तक 15 मिनट के अंदर मैं पहुंच चुका था स्पेनल हॉस्पिटल वहां जब पता चला कि बच्चे जो ना मौके पर डेथ हो गया बच्चे रहा नहीं दुनिया के अंदर में मेरा भाई स्कूल से आया था एग्जाम दे करके उसके बाद फिर वो मुझे कह रहा है कि दीदी मुझे 20 रुपए चाहिए मुझे समोसा खाना है तो मैंने उसको 20 रुपए दिया तो उसके बाद वो 20 रुपए लेके समोसा लेने गया उसके बाद फिर वो मतलब थोड़ी देर बाद उसके कुछ एक दो फ्रेंड आए तो वो कह रहे हैं कि दीदी मुर्शिद को मतलब एक थार महिंद्रा थार थी वो मतलब उसको एक्सीडेंट करके मार के और चले गए और मार के गए तो मतलब उसको उठाना चाहिए था उसको हॉस्पिटल तो लेके जाते बल्कि वो मतलब हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए एक बार तो वो मतलब था उसमें जान उसके बाद Locals in Chaudhary Bazar Dabaka have raised serious corruption allegations against a BWD road repair project under the Gokapani division. Residents claim the newly repaired road is already deteriorating with visible crack and loose surfaces. They allege that work is being done without proper planning or measurement and bitumen is being applied poorly. The lack of standard procedures and irregular metalling has sparked public outrage. Citizens are demanding swift action from the department and government intervention to ensure accountability. মাপটো আমাৰ দাবী যে ৰাস্তাটো পুনৰ মেৰামতি হৈ আছে ৰাস্তা মানে আকৌ পুনৰ যিখিনি তলত হিল আছে লেয়াৰ যিটো আছে এইটো জেচিবি খান্দি এইটো ৰলিং কৰি সমান কৰিব লাগে ৰলিং কৰি সমান কৰি অলপ বালি ছটিয়াই কি কৰিব লাগে এইটো মানে ইয়াৰ ওপৰত মেটেলটো মাৰিব লাগে ৰাস্তাটো আনইভেন হৈ আছে বুজি পাইছে আনইভেন হৈ আছে ৰাস্তাটো অসমান মানে তলত হিল কৰবাত গাঁত আছে কৰবাত ওখ কৰবাত চাপৰ ইয়াৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট মেটেলিং মাৰা হৈছে আৰু মেটেলিংটো মানে কোনো জোখ মাখ নাই বিনা জোখ মাখ নলুকাই কোনো ইঞ্জিনিয়াৰিং নাই এনেকুৱা ডাইৰেক্ট মেটেলিং মাৰা হৈ আছে আপোনালোকে কৰবাত দেখিব এনেকৈ ইয়াত দেখিবলৈ পাব এইটোৰ সাইডত এইটো কোনো জোখ মাখ লৈ মাৰিছে নেকি ইমানখিনি ভাৰতৰ এইটো চাওক দুলি আছে দুলি এইটো তলত চাওক খালি দুলিয়াইছো এই চাওক আপোনালোকে ইয়াত কোনো তেল চেল মাৰা নাই কোনো তেল মাৰা নাই তেলেই নাই তেল নাই এইবোৰ দুলি মাৰা দুলিৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট মেটেলিং কৰি কৈছে আমাৰ কথা হ'ল জেচিবি এনেকা কৰবাত এনেকুৱা মেৰামতি কৰে নেকি জেচিবিৰে খান্দি ইয়াৰ পিছত ৰলিং কৰি তলৰ তৰফটো সমান কৰিব লাগে তলৰ তৰফটো সমান কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত তেল মাৰি এই সাফা কৰি কি কৰিব লাগে সাফা কৰি তেল মাৰি ইয়াৰ পিছত মেটেলিং কৰি সমান কৰিব লাগে আৰু মেটেলিং এনেকৈ কৰিব লাগে এটা সাইডত কৰি এটা সাইডত যান বাহন আহিবলৈ দিব লাগে একেবাৰে সম্পূৰ্ণকৈ মাৰি গৈছে পিছফালে গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে আৰু ৰাস্তাটো কি হৈছে আগফালে কাম কৰি আছে ৰাস্তাটো পিছফালে নষ্ট হৈ আছে এনেকুৱা ৰাস্তা 2 সপ্তাহ নেটিকে এইবোৰৰ ট্ৰেক্টৰ চলা ৰাস্তা দান অহা যোৱা ট্ৰেক্টৰৰে দান অহা যোৱা কৰা ৰাস্তা এই ডাম্পাৰ চলা ৰাস্তা মই জিলা উপায়ুক্তক জনাব খোজো যে Alok Kumar Chakraborty took charge as the Inspector General of the Tripura Frontier BSF, succeeding A.K. Sharma, who has been posted to Manipur. Chakraborty, a decorated officer, awarded the Police Medal for Meritorious Service and the ITI Utkarsh Seva Padak brings vast operational and administrative experience. He has served along the Indo-Bangladesh and Indo-Pakistan borders, participated in anti-Naxal operation and held key instructional roles at premier training centers. He also served with a special protection group and the UN mission in Kosovo.
Two BCA students of Government Holkar Science College in Indore have been suspended for 60 days after allegedly circulating a fake letter about Principal Dr. Anamika Jain's date on social media to stall exam. The letter falsely claimed that online exams scheduled for October 15 and 16 were postponed due to her sudden demise. Following a complaint by Dr. Jain, police filed a case against the student for fabricating a false document with intent to defame. The students have admitted their mistake in writing. The incident caused distress to Dr. Jain and her family. Holkar Science College, established in 1891, currently has about 15,000 students. कॉलेज का मामला है जो कि थाना भवरकुआ में होलकर कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें ये बताया गया था उनकी मृत्यु की आकस्मिक सूचना को व्हाट्सएप के ग्रुप में जो उनकी के स्टूडेंट्स के बीच जो डिफरेंट जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं सेक्शंस के स्टूडेंट उनके बीच ये स्प्रेड किया गया है। तो इस पर से सब इंस्पेक्टर नीलमणि के द्वारा जाँच करके 2 व्यक्तियों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसमें 336(4) के तहत इसमें हिमांशु जायसवाल और जो मयंक कछवा जो कि दोनों ये जो छात्र इसके इसी जो BCA 3rd सेमेस्टर के छात्र हैं और इनके द्वारा ही ये कृत्य किया गया है। तो फिलहाल इनके खिलाफ FIR रजिस्टर की जाकर और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये इन्होंने जैसा कि मैंने बताया कि जो CCEC जो ऑनलाइन एग्जाम्स होने थे उनके द्वारा ये बताया गया कि चूँकि आकस्मिक निधन हो गया था CCE एग्जाम्स और जो ऑनलाइन जो क्लासेज है वो कैंसिल हो गई हैं। तो इस तरह का इनके द्वारा मैसेज चलाया गया था। क्योंकि जो चिंतित हो गए लोग महाविद्यालय के स्टाफ के लोग कि भाई ये गलत भी हो सकती है, पर संशय था सबको। सबने मुझे कॉल किया, कुछ लोग मेरे पास घर पे भी आ गए कि अचानक कुछ हो गया हो। कॉलेज का मामला है जो कि थाना भवरकुआ में होलकर कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें ये बताया गया था उनकी मृत्यु की आकस्मिक सूचना को व्हाट्सएप के ग्रुप में जो उनकी के स्टूडेंट्स के बीच जो डिफरेंट जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं सेक्शन। Despite the festive cheer, border security force personnel along the Jammu international border remain vigilant and alert. Braving all weather conditions, they continue their crucial duty of guarding the nation's border, ensuring security and safety to all times. चाहे बारिश हो, चाहे दिन हो या चाहे रात हो, हम बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं और सारे चेले इसके तैयार हैं। तो अभी ठंड भी पड़ रही है, तो ठंड में किस तरह से आप लोग अपनी जो ड्यूटी है वो देते हैं? अब चाहे ठंड हो या रात हो, देश की निगरानी के लिए हम लोग ड्यूटी करते हैं और दुश्मन को अपने एरिया में आने से रोकते हैं। और क्योंकि अभी त्योहारों का भी सीजन है, दिवाली है और भी कई त्योहार हैं, तो ऐसे में अपने घरों से भी आप दूर हैं लेकिन रक्षा कर रहे हैं यहाँ पर सरहद पर रहकर, तो क्या कहना चाहेंगे? चाहे होली हो, दीपावली हो या कोई अन्य त्यौहार हो, हमारी दीपावली होली हम लोग यहीं मनाते हैं। कि BSF का जवान जो है, चाहे वो कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे बारिश का मौसम हो, हम जो है दुश्मन की ओर से की जाने वाली कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है बॉर्डर पे तैनात हैं पूरी तरह से। चाहे बारिश हो, चाहे दिन हो या चाहे रात हो, हम बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं और सारे चेले इसके तैयार हैं। तो We will now take a short break. Stay tuned. We'll be right back. Welcome back, viewers. Let's get back with the news. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis unveiled India's first electric truck featuring battery swapping technology at Blue Energy in Chakan, Pune. Fadnavis staged on this truck and highlighted plans to set up battery swapping stations along the Mumbai-Pune expressway for quicker recharging of commercial vehicles. He praised the innovation as a significant step towards boosting electrical mobility and cutting carbon emissions in the transport sector. आज
ब्ल्यू एनर्जीच्या वतीने भारतातला अतिशय आधुनिक आणि पहिलं इलेक्ट्रिक ट्रक हा या ठिकाणी लॉन्च करण्यात आलेला आहे। या ट्रकमध्ये बॅटरी स्वॅपिंग टेक्नॉलॉजी आहे आणि अतिशय किफायतशीर किमतीत हा ट्रक उपलब्ध आहे। यामुळे आपलं जे काही कार्गो ट्रान्सपोर्टेशन आहे याच्यामध्ये आज जे प्रदूषण होतं ते प्रदूषण पूर्णपणे संपुष्टात येईल, आपलं परकीय चलन वाचेल आणि अतिशय एफिशियंट अशा प्रकारची सिस्टीम आपल्याला मिळेल। हा जो काही ट्रक या ठिकाणी तयार करण्यात आलेला आहे हा पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचा ट्रक आहे। आज ब्ल्यू एनर्जीच्या वतीने भारतातला अतिशय The Meghalaya government has begun a major safety initiative by installing CCTV cameras across 47 localities in Shillong, linked to the Smart City Project's Integrated Command and Control Center. Chief Minister Conrad K. Sangma unveiled the plan after consulting community group emphasizing the role of local involvement in enhancing security. 7 areas already have operational cameras, with the rest to be covered within 2 months. The initiative also includes plans for sub-command centers, counseling services, better street lighting and public awareness campaign to support vulnerable group and youth. Sangma urged caution against misinformation and called for collective efforts to ensure long-term safety. Two tourists from Thailand died in a tragic road accident on Agra-Lucknow Expressway near Bungamau on Thursday. The victims had stepped out of their car near a flyover when another vehicle, reportedly losing control over a tire, burst struck them. Police rushed them to the hospital, but both were declared dead on arrival. An investigation is underway. थाना बांगरमऊ क्षेत्रांतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किलोमीटर संख्या 240 पर हवाई पट्टी के पास खड़ी इनोवा क्रिस्टा कार में सवार 2 विदेशी नागरिक कार से नीचे उतरकर टॉयलेट कर रहे थे। तभी टायर फटने से अनियंत्रित हुई अर्टिगा कार ने पीछे से दोनों नागरिकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों विदेशी नागरिक आनंद पुत्र अज्ञात उम्र करीब 35 वर्ष, सकुशन पुत्र किम्पाहाई उम्र करीब 40 वर्ष, निवासीगढ़ थाईलैंड गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को सीएचसी बांगरमऊ भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचायत सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना बांगरमऊ क्षेत्रांतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किलोमीटर संख्या 2। Australia captain Alyssa Healy scored an unbeaten 113 of 77 balls to guide her team to a dominant 10-wicket victory over Bangladesh in the Women's World Cup match on Thursday. Healy, who admitted to some shaky glove work, made it up for it with a batting masterclass alongside who remained 84 not out as Australia chased down 199 in just 24.5 overs without losing a wicket. Eleanor King's tight bowling earned her player of the match honours. Bangladesh captain Nigar Sultana lamented missed partnerships and said her team must learn from their mistakes ahead of their next match against Sri Lanka. Imphal hosted a one-day workshop on the modality of performance assessment, review and analysis of knowledge for holistic development at Maharaja Botcharan College. The event, organized by COSM Manipur and Parak NCERT, aimed to train resource persons to implement Parak's initiative, including competency-based question papers and holistic progress cards. COSM Secretary Kudra Karmpant Ani Kumar emphasized the role of National Education Policy 2020 in shifting focus towards holistic development. Professor Indrani Badri of Parak highlighted efforts to standardize students' assessment across board. Over 200 participants attended the workshop.
Chief of Army Staff General Upendra Trivedi met Nepal Army's Lieutenant General Pradeep Jung at the sidelines of the United Nations Troop Contributing Countries Chief Conclave in New Delhi. The leaders discussed strengthening defense ties, enhancing joint training, and collaborating in UN peacemaking operation. Both reaffirmed their commitment to ongoing defense dialogue and institutions exchange, highlighting the long-standing partnership between the two armies based on the mutual trust and respect. The UNTCC hosted by India was from October 14 to 16 brought together senior militants leaders from over 30 countries to discuss global security challenges. Defense Minister Rajnath Singh emphasized India's commitment to upholding the rule-based international order and the philosophy of Vasudhaiva, the world as one family. Ahead of a planned cabinet expansion, all 16 ministers in Gujarat submitted their resignations to Chief Minister Bhupendra Patel on Thursday. The state is expected to induct around 10 new ministers, including the current 17-member cabinet, which include 8 cabinet-ranked ministers and 9 ministers of state. Gujarat's assembly allowed up to 27 ministers, or 15% of the 182 members. Patel took oath for his second term as CM on December 12, 2022. Delhi police cyber cell arrested 12 cyber criminals and busted several interstate scam networks in a major operation. In the first case, 3 people were arrested from Rajasthan and Madhya Pradesh for a digital arrest scam that cheated an elderly man of 42.49 lakh by posing as police officer. The team recovered 7.8 lakh for the victim. In another case, 2 men were arrested for online romance and investment scam where victim lost 40.27 lakh. The accused used fake social media profile to promise marriage and profit from forex trading. 2.49 lakh was refunded, and further investigation led to arrest in Agra, Uttar Pradesh. Overall, the cyber cell successfully dismantled multiple fraud models and recovered part of the stolen money. Union Minister Jyotiraditya Scindia announced that India Post will start guaranteed mail and parcel delivery services from January 2026. The new speed post options will deliver mails within 24 and 48 hours, and parcels will reach the next day instead of the current 3 to 5 days. Scindia said this faster service aims to make India Post more efficient and turn it from a cost center into a profitable center by 2029. डेफिनेशन हमने करवा दिया है और ये हम लोग लॉन्च करेंगे जनवरी में। तो अभी तैयारियां चल रही हैं, पायलट का काम चल रहा है और पायलट लॉन्च किया जाएगा आने वाले जनवरी में। इंटरनेशनल में ट्रैक्ट इंटरनेशनल, स्पीड पोस्ट इंटरनेशनल और डायरेक्ट लाइन, ये तीनों प्रोडक्ट्स के आधार पर नई तीव्रता इंटरनेशनल पोस्ट में हम लोग ला रहे हैं। और पार्सल में पार्सल लास्ट माइल, पार्सल ई टू ई, एंड टू एंड बुकिंग प्लस डिलीवरी, जो वर्तमान में कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है डिलीवरी टाइमलाइंस की, और पार्सल नेक्स्ट डे डिलीवरी, ये भी 24 स्पीड पोस्ट के आधार पर। आज स्पीड पोस्ट 3 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 4 दिन लग सकता है, लेकिन 24 मतलब 24 घंटे। हम 1 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम घंटों की बात कर रहे हैं। और यहां भी पार्सल नेक्स्ट डे डिलीवरी जो वर्तमान में 3 से 5 दिन चलता है। तो 3 प्रोडक्ट्स मार्च में लॉन्च होंगी और 5 प्रोडक्ट्स जनवरी में लॉन्च होंगी। अब इस परिवर्तन में Union Home Minister Amit Shah was speaking at a roll poll rally in Saran on October 17, said that the NDA will return to power in Bihar with its biggest majority in the last 20 years. Addressing a large crowd, he spoke about the achievement of the NDA government and promised more development and stable government. He urged the people to vote for the NDA for a better and more prosperous future for the state.
On October 17, 10 Indian Super League clubs criticized the All India Football Federation for delaying the process to select a new commercial partner. They call it a breach of trust and damaged quick action. The federation had earlier promised the Supreme Court that the tender process will be completed by October 15, but it has not started yet. The club are upset with a lack of communication and transparency. Federation said delay happened because of the paperwork and research done by consulting firm KPMG and Justice Nageshwara Rao, who is overseeing the process on the Supreme Court's order. On Friday, the Supreme Court told the Tamil Nadu government to wait for a decision on a related case before hearing its challenges against Governor R.N. Ravi. The governor sent the Tamil Nadu Physical Education and Sport University Bill 2025 to President instead of approving it. The court said the case will be heard after the Constitution bench gave its judgment, expecting before November 21. The Tamil Nadu government argues that the government's act of sending the bill to President is unconstitutional and goes beyond his power. The governor reaffirmed the bill in July, even though it was sent to him with the Chief Minister's approval in May. On October 17, the Election Commission of India held an important meeting at the Nirvanchi Sadan in New Delhi to discuss steps to stop the flow of cash, drug, liquor and other illegal items during the upcoming Bihar election. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar along with Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi asked all law enforcement agencies to take early and strong action. The ACI stressed the need for intelligence sharing, coordination and strict monitoring of borders to stop smuggling. They clearly said there will be zero tolerance for any illegal activities to ensure free and fair election in Bihar. On Friday, Defence Minister Rajnath Singh said the Indian plans to fully produce its defence equipment within the country to avoid depending on foreign supplies, which he called a strategic risk. He said this while opening a new production lane with Tejas fighter jet and a trainer jet facility. With the new facility, Hall is expected to make at least 24 Tejas aircraft. Singh shared that earlier India imported 65 to 70% of its defense need, but now 65% is made locally. He added that India's defense export have grown to 25,000 crore, up from less than 1,000 crore a few years ago. ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A तेजस की थर्ड प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40 एयरक्राफ्ट की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं HAL को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं हृदय से बधाई देता हूं। नासिक के त्रयंबकेश्वर में भगवान शिव का विराजते हैं, जहां भगवान शिव त्रयंबक के रूप में हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों होते हैं। यही कारण है कि यहां आकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दिव्य भूमि पर आ गया। हालांकि साथियों, नासिक की यह भूमि केवल आस्था की नहीं है, श्रद्धा की ही नहीं है, बल्कि सेल्फ रिलायंट और कैपेबिलिटी का भी यह प्रतीक बन चुकी है। यहां एक और आस्था है तो वहीं दूसरी ओर इसी नासिक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक गौरवशाली कैंपस भी राष्ट्र की रक्षा शक्ति को सिंबलाइज करता है, यानी उसका प्रतीक बनकर खड़ा है। और आज जब मैंने नासिक डिवीजन में तैयार किए गए सुखोई 30 LCA और HTT-40 विमानों की उड़ान देखी तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में
पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट। On Friday, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel added 19 new ministers to his cabinet, making the total number of ministers 26. He also promoted Harsh Sanghavi from Junior Home Minister to Deputy Chief Minister. The new ministers took oath from Gujarat Governor Acharya Devnath. Sanghavi, who represents Surat's Munjara area, was previously Minister of State for Home. 6 ministers from the previous cabinet, including Sanghavi, stayed in their posts as their prestigious resignation were not accepted. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah, during a visit to Kulgam, reaffirmed his party's commitment to restoring the region's special status and implementing the 2000 autonomy resolution. He said his party aims to reinstate Articles 370 and 35A and restore full statehood as it exists before August 5, 2019. Abdullah also pledges to revoke FIRs filed during the COVID-19 period and ensure that power granted by the centre are used for public welfare. He underlined the party's focus on dignity, identity and development while ensuring balanced progress across the region. हमारे पास एक साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साथ किया हुआ एक वादा है जो वादा पूरा होना चाहिए। हम तो सोच रहे थे कि पहले साल के अंदर अंदर ही मरकज़ की हुकूमत अपना ये वादा पूरा करेगी, लेकिन चलिए किन वजूहात के बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को आज भी स्टेटहुड से महरूम रखा गया वो मरकज़ और बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिशों को छोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक आपने दरबार मूव के हवाले से बात की, मैंने पहले दिन से मैं कहता आया कि यूटी होते हुए जितने हम अपने लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे कर सकते हैं हम कर लेंगे। इस सिलसिले में चाहे रिजर्वेशन को रिव्यू करके उसमें तब्दीली लाना, कैबिनेट सब कमेटी जिसकी निगरानी सकीना यत्तू साहिबा कर रही थी, उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके अपना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश किया। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दी। अब डिपार्टमेंट के तरफ से कैबिनेट का मेमो तैयार किया जा रहा है, उसको बाय सर्कुलेशन हम मंजूरी देके एलजी साहब के पास भेज देंगे। वो एक वादा था हमारा लोगों के साथ। इसी सिलसिले में दरबार मूव को दोबारा शुरू करना, ये भी एक वादा हमारा लोगों के साथ था। लगभग 3 हफ्ते पहले जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। वो फैसला एलजी साहब को भेजा गया। जैसे ही एलजी साहब का दस्तखत फाइल पे हमें वापस मिला, हमने वो ऑर्डर जारी किया है और 2021 के बाद दोबारा जम्मू और श्रीनगर को इस दरबार मूव के जरिए जो है जोड़ा जा रहा है। मैंने राज्यसभा और खासकर महबूबा मुफ्ती साहिबा के बयान को लेके मुझसे इसमें जम्मू में पूछा गया और मैंने जम्मू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जवाब में यही कहा जो मैं आज फिर दोहराऊंगा। असेंबली में कौन सा बिल आएगा और कौन सा नहीं आएगा इसका फैसला स्पीकर साहब करेंगे, लेकिन कोई ऐसा बिल हाउस के सामने आए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा, मेरी हुकूमत उस बिल में कोई रुकावट पेश नहीं करेगी। लेकिन मैं यहाँ से या कोई ऑनरेबल मेंबर असेंबली का स्पीकर साहब को डिक्टेट नहीं कर सकता कि कौन सा बिल आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए। बिल लाने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। जो भी अच्छे बिल होंगे उन पे हम Indian pharmaceutical companies are showing increasing interest in setting
up factories in Russia. Russian officials Surrey chairman said talks are underway for joint drug production and that Indian firms are exploring different regions for investment. He also mentioned a major deal where a Russian company will build a 120 new generation train in India, showing strong cooperation between the two countries. Investment heads said involving local industries make such partnership more effective. US President Donald Trump announced a second meeting with Russian President Vladimir Putin, likely in Budapest in about 2 weeks as they renew efforts to end the war in Ukraine. The announcement came after a frank and trusting phone call initiated by Putin. Trump will meet Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the White House on Friday to discuss further support for Ukraine, including the possible sale of long-range missiles. Trump aims to build on a recent ceasefire achievement in Gaza and focus on ending both conflict despite challenges in persuading Putin for direct talks with Zelensky. EU has agreed on a new European defence industry program worth 1.5 billion to strengthen Europe's defence industry and support Ukraine. EU Commission President Ursula said the plan will make Europe defence ready by 2030 and help preserve peace. About 200 million will go to Ukraine through a special support fund. The program will also ensure EU countries have reliable access to defence equipment during crisis and reduce dependence on non-EU suppliers, with a rule that no more than 35% of parts can come from outside the EU. That wasn't the deal that was made, and we'll see what happens. It's calmed down. It's a tough neighborhood. We know that. We have a commitment from them, and I assume they're going to honor that commitment. I hope they do. And I understand they brought back some additional bodies today. It's a rough deal when you think of it, right? Very rough. We have our hostages back completely. We were very lucky with that. But it's a tough situation. They brought back bodies today, as you probably know. But they also said they're going to behave. We're going to find out if they behave. If they behave good, if they don't behave, and that wasn't the deal that was made, and we'll see what happens. It's calmed down. It's a tough neighborhood. We know that. We have a commitment from them, and I assume they're going to honor that commitment. I hope they do. And Marnus Labuschagne has been called up to replace injured all-rounder Cameron Green for the 3-match ODI series starting Sunday. Green is sidelined due to side soreness, with selectors' cautions ahead of the Ashes new month. Earned his spot after scoring 159 in Shield match. This 4th century this season Australia has made more other changes. Josh Philippe replaced Josh Inglis and Matthew stepped in for Adam Zampa. India's focus is on the return of Virat Kohli and Rohit Sharma, playing their 3rd ODI since March. The UAE qualified for the ICC Men's T20 World Cup 2026 after defending Japan by 8 wickets in the Asia Pacific qualifier in Oman. With this win, the UAE joined Nepal and Oman as regional qualifiers, completing the list of 20 teams for the tournament. UAE bowlers Haider Ali and Mohammad Arfan led the attack. In reply, UAE opener Alishan and Mohammad built a strong partnership, guiding the team to victory with 47 balls remaining. The 2026 T20 World Cup, co-hosted by India and Sri Lanka, will feature top teams from the last World Cup.
Keb's Cafe, a restaurant owned by Indian comedian Kapil Sharma in Surrey, Canada, was shot at for the third time since its July opening. The latest attack occurred early Thursday morning around 3:45 a.m. in the Newton area with multiple bullets damaging the property. Staff were injured but unharmed. Surrey Police Service is investigating with help from forensic team, while no official link to extortion has been confirmed. Officials suspect it may be connected. The cafe has also come under the fire on July 10 and August 7. SBS say this is part of a wider extortion trend with 65 such cases and 35 shooting reported in Surrey this year. It's gonna get worse now. If these guys don't get caught, a third time this has been shot, if these guys don't get caught, it's getting worse and worse. So I request all the elected officials, all the team leaders, all the board members that are on there to get together and start doing something about this, because this shit's really getting out of hand. And it's getting scarier and scarier day by day. It's gonna get worse now. If these guys don't get caught, a third time this has been shot, if these guys don't get caught. US President Donald Trump announced a second meeting with Russia President Vladimir Putin, likely in Budapest in about 2 weeks, as he renew effort to end the war in Ukraine. The announcement came after a frank and trusting phone call initiated by Putin. Trump will meet Ukrainian President Vladimir Zelensky at the White House on Friday to discuss further support for Ukraine, including the possible sale of long-range missile. Trump aims to build on a recent ceasefire achievement in Gaza and focus on ending both conflict despite challenges in persuading Putin for direct talks with Zelensky. Meanwhile, the White House signals growing interest in new sanctions against Russia, awaiting Trump's normal endorsement. Putin today, we spoke about meeting in Hungary with him. Do you have a timeline or a date set for when? Yeah, I would say within 2 weeks or so, pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov, and they'll be meeting pretty soon. They're going to set up a time and a place very shortly. Maybe it's already set up. They've already spoken. And I thought it was a very good phone call. I thought very productive. But I'll be meeting with President Putin, and we'll make a determination. Tomorrow I'm meeting with President Zelensky, and I'll be telling him about the call. I mean, we have a problem. They don't get along too well, those two, and it's sometimes tough to have meetings, so we may do something where we're separate but equal. We'll meet and talk parties, but this is a terrible relationship the two of them have, and it's one of those things. I've seen things that nobody would believe, but this is one of them. So we're going to be meeting in Hungary. Viktor Orban is going to be hosting, and it's really something that's time. Last week, over 7,000 people were killed. That's ridiculous. And you know, it doesn't affect our country. We're not losing people. We're not losing Bobby. We're not losing Americans. But they're losing Russians, Ukrainians, mostly soldiers, for the most part, soldiers. And we hope we're going to get it stopped. That is all for the Nltv English Prime Time. For more news and update, keep watching.